We are starting with essential words for the IELTS, and today's topic will be aerobic exercise and brain health. यानी brain health means हमारे brain mental health, और aerobic exercise means exercise which is done in the open space. जो खुली हवा में हम करते हैं उसको aerobic exercise कहते हैं. So before we do that, I would like to discuss the rough meaning of these words. सबसे पहला है aerobic. Aerobic यानी जो खुली हवा में open space में किया जाता है. कैपेसिटी यानी कोई चीज करने की क्षमता, कोई चीज करने की जो एबिलिटी होती है, दैट इज कैपेसिटी. कॉग्निशन, ब्रेन की जो एक्टिविटी होती है, ब्रेन जो जिस चीज को काम प्रोसेस करता है, दैट इज कॉल्ड कॉग्निशन. कॉन्सेंट्रेशन मींस हम ध्यान देते हैं, कोई चीज पे ध्यान देते हैं, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन. काउंटरएक्ट यानी कोई भी चीज का सामना करना, कोई प्रॉब्लम है तो उसको फेस करना, दैट इज काउंटरएक्ट. डिमेंशिया इज अ टाइप ऑफ मेंटल डिजीज जिसमें आदमी सब कुछ भूलता रहता है, धीरे धीरे सब कुछ भूल जाता है, दैट इज डिमेंशिया. नेक्स्ट इज डिटीरियरेशन ऐसे धीरे धीरे जो कोई चीज की क्वालिटी, कोई चीज की जो भी स्टैंडर्ड है वो कम हो जाता है, नीचे उतर जाता है, दैट इज कॉल्ड डिटीरियरेशन. डायग्नोज यानी जब डॉक्टर लोग पता लगाते हैं कि आपके शरीर में प्रॉब्लम क्या है तो उसको डायग्नोसिस बोलते हैं. तो प्रॉब्लम को पता लगाना इज कॉल्ड डायग्नोस. डिसऑर्डर इज व्हेन थिंग्स आर नॉट इन ऑर्डर, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है, दैट इज डिसऑर्डर. ग्रेविटी, वी ऑल नो व्हाट इज ग्रेविटी. गुरुत्वाकर्षण, राइट, जो पृथ्वी को हमारे तरफ नीचे की तरफ कोई चीज को खींचते हैं, दैट इज ग्रेविटी. इम्पेयर्ड यानी डैमेज हो गया हुआ. जैसे कि अगर आप ड्राइव कर रहे हो रात को, लेकिन अगर आपको चश्मे हैं तो आपका जो विजन है वो कमजोर है, सो योर विजन इज इम्पेयर्ड, राइट. इम्पेयर्ड मीन्स व्हेन आपकी जो फैकल्टीज है, फैकल्टीज का मीनिंग है आपके ब्रेन की जो एक्टिविटी स्किल्स है, देखने की, सुनने की, जजमेंट लेने की जो एबिलिटी है, वो जब कमजोर हो जाती है तो हम उसको बोलते हैं इम्पेयर्ड. थिंग्स आर इम्पेयर्ड. इंडिकेट यानी दर्शाना, कोई चीज बताना इज कॉल्ड इंडिकेट. लिंक यानी कोई चीज से जोड़ना, इज लिंक. मूड इज ऑब्वियसली आप जो फील करते हो एट दैट मोमेंट, वो मोमेंट पे आप जो फील करते हो, दैट इज योर मूड. प्रीवियसली यानी पहले के टाइम में, यानी अभी है उससे पहले, उससे अलग, दैट इज प्रीवियसली. रेगुलेट यानी रूल्स बनाना जिससे हर चीज सेम तरीके से हो, उसको बोलते हैं रेगुलेट, टू मेक रेगुलेशन. रोडेंट इज अनदर वर्ड फॉर रैट्स, चूहे को बोलते हैं हम रोडेंट. स्पेशल इज रिलेटेड टू स्पेस. जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो गाड़ी के दोनों साइड पे जो गैप रहता है, तो गाड़ी चलाने के टाइम पे हम बोलते हैं कि जजमेंट आना चाहिए आपको, यानी आपको स्पेस का आइडिया आना चाहिए, तो उस स्पेस से रिलेटेड इज कॉल्ड स्पेशल. स्टेव ऑफ यानी कोई चीज को अटका देना, कोई चीज को होने से अटका देना, इज कॉल्ड स्टेव ऑफ. एंड स्टिमुलेट यानी कोई चीज को जागरूक करना, एक्टिवेट करना, दैट इज स्टिमुलेट. So मैंने बेसिक आपको मीनिंग दे दिए है. नाउ यू गाइज विल बी टेलिंग मी द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स. So before we do that, let me have a here. So let's start by matching the words. You will be telling me the right words and I'll match them with the right meaning. So aerobics, what is the answer for aerobics? Aerobics is I, correct. That is relating to energetic exercise, that is aerobic exercise. Next word is capacity. Capacity is P. Total amount available, that is capacity. Cognition, brain use करने की ability. So here the meaning is the use of mental processes, that is cognition. What is concentration? अच्छा, concentration का ये भी meaning होता है, यानी कोई चीज बहुत concentrated form में है, तो that is called large amount of something in the same place, that is called concentration.
लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन, उस तरह से मीनिंग. व्हाट इज काउंटरएक्ट? M. To work against, कोई चीज के सामने काम करना, that is counteract. What is dementia? दिमाग का धीरे धीरे सब भूल जाता है. Dementia is T. The loss of intellectual functioning of the brain. Okay. Now tell me, what is deterioration? Anyone? जब कोई चीज बदतर हो जाती है, that is called deterioration. So that is B. The situation of becoming worse. Diagnose. Problem निकालना, बताना. It is F. To identify an illness. Next, disorder. Disorder is a disease or illness. That is a disorder. Gravity. Now, gravity का दूसरा मीनिंग हमने देखा कि ग्रेविटी यानी अर्थ के खींचने की जो एबिलिटी होती है, दैट इज ग्रेविटी. लेकिन आप कोई चीज को बोलते हैं कि आप सिचुएशन की ग्रेविटी नहीं समझ रहे हो, नहीं सिचुएशन कितना सीरियस है वो नहीं समझ रहे हो. सो ग्रेविटी इन दिस सेंस मीन सीरियसनेस, कि भाई इसकी ग्रेविटी बहुत है, यानी ये बहुत सीरियस मैटर है. इट्स अ ग्रेविटी, दैट इज द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन. नेक्स्ट वन, इम्पेयर्ड. जब कोई चीज ठीक से काम नहीं करती तो क्या हो जाती है वो? इट इज डैमेज्ड और वीकन्ड, कमजोर हो गई, दैट इज इम्पेयर्ड. इंडिकेट यानी दर्शाना, दैट इज H. टू शो. व्हाट इज लिंक? Connection. Correct. R. Connection. What is mood? Mood is E, right? The feeling or state of mind. Previously. पहले. Before. Okay. What about regulate? कोई चीज को रेगुलेट कर रहे हैं हम. That is to control. कोई चीज को कंट्रोल करते हैं आप. What is rodent? चूहा. N. The group of small animals that includes mice and rats. Spatial. Relating to space. Stave off is O, to prevent something. Stimulate is to cause a response. किसी को जगाना, that is stimulate, active करना. Okay, so let's start with our passage here and look at what we have got here. We have a reading passage, aerobic exercise and brain health. So let's start reading. You will come across the words that we just saw. हमने जो words देखे वही words हमारे सामने आएंगे, right? All right. So to read the first one, I'll ask Gracie. Gracie, can you read the first paragraph? Gracie, are you there with us? Yes, sir. Please read the first paragraph till here. The disease-fighting, weight-controlling benefits of physical exercise, especially aerobic exercise, have long been known. Now researchers have discovered another advantages. Physical exercise has a powerful effect on brain health, and the benefits go beyond the release of endorphins, the chemical in the brain that improves mood. Exercise affects the brain plasticity, that is its ability to recognize itself, and can reduce the age-associated loss of brain tissue that decreases cognition in the elderly and in those who have disorders such as Alzheimer's disease. Alzheimer's is a disease जिसमें लोग भूल जाते हैं. आपको ये disease अमिताभ बच्चन की मूवी ब्लैक में देखने को. In that movie he starts forgetting things. So धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगता है, right? The disease fighting and weight controlling benefits, यानी the benefits of physical exercise. यानी हम जब physical exercise करते हैं तो हमारी body में से कितने सारे ऐसे disease होते हैं जो fight उसको निकाल देता है, weight को control करता है. Especially aerobic exercise have been known for long been known, means इसके benefits तो हमें कई टाइम कितने सालों से पता है. लेकिन now researchers have discovered another advantage. क्या advantage है कि physical exercise has a powerful effect on brain health. हम जो exercise करते हैं उससे हमारा brain भी fit रहता है.
And the benefit go beyond the release of endorphins. तो हम अभी तक सोचते थे कि सिर्फ एंडोर्फिन्स रिलीज करता है, एक्सरसाइज करते हैं तो डोपामाइन या एंडोर्फिन रिलीज होता है, बट दैट इज नॉट जस्ट द ओनली थिंग. द केमिकल इन द ब्रेन दैट इंप्रूव्स मूड, नॉट जस्ट दैट, इट गोज बियॉन्ड यानी उससे परे, उससे ऊपर जाता है. दैट इज द वर्ड बियॉन्ड. Exercise affects the brain's plasticity, that is its ability to reorganize itself. खुद को वापस reorganize करता है brain and can reduce the age associated loss of brain tissue that decreases cognition. यानी brain function जिससे धीरे धीरे उम्र के साथ लोगों का धीमा हो जाता है, slow हो जाता है in the elderly and those who have disorders, जिनको ये बीमारी होती है such as अल्जाइमर्स. यानी हमारे जमाने में ये डिजीज बहुत कॉमन है कि लोग अपनी याददाश्त धीरे धीरे चली जाती है, तो उसको पकड़ के रखने के लिए यानी फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये ब्रेन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है. आयुषी प्लीज रीड नेक्स्ट पैरा. Recent studies have found that exercise activates a number of factors in the brain, including a protein known as brain derived neurotrophic factor that stimulate the growth and development of brain cells. BDNF regulates the production of synapses, the connection between neurons that are essential for transmitting signals from one nerve cells to the next, and may also be involved in producing new nerve cells. Using rodent models, researchers found increased concentration of BDNF in the hippocampus, an area of the brain involved in learning and memory and associated with dementia. After only 1 week of regular exercise, a study in older humans found a correlation between aerobic fitness, the size of hippocampus, and performance on spatial memory test. Other human studies noted that aerobic exercise increased the volume of gray matter in some parts of the brain. अभी जो recent studies हुए हैं have found that exercise जो है हमारे ब्रेन में जो एक्सरसाइज होती है activates a number of factors in the brain. तो एक्सरसाइज करके ब्रेन के कई फैक्टर्स स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि there's a protein known as brain derived neurotrophic factor. ये जो है that stimulate the growth and development of brain cells. तो ये ब्रेन में ये प्रोटीन प्रोड्यूस होता है. The BDNF regulates, ये क्या करता है, ये regulates the production of synapses. Synapses यानी जो छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल जो होते हैं, those are synapses, the connection between neurons that are essential for transmitting signals from one nerve cell to the next, and they may also be involved in producing new nerve cell. तो ये ब्रेन की बेसिकली हेल्थ को ज्यादा अच्छा बनाता है. यूजिंग रोडेंट मॉडल्स, यानी उन्होंने प्रैक्टिस किसके ऊपर की, चूहों के ऊपर. छोटे छोटे जो चूहे जैसे प्राणी होते हैं उसको बोलते हैं रोडेंट. तो रोडेंट मॉडल को यूज करके रिसर्चर्स हैव फाउंड इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ BDNF, यानी ये जो BDNF नाम का जो प्रोटीन है वो बहुत क्वांटिटी में बढ़ता है इन द हिप्पोकैम्पस, दैट इज द एरिया ऑफ द ब्रेन that is involved in learning and memory, and it is also associated with dementia. यानी लोग जब उनकी याददाश्त चली जाती है तो वो भी यही एरिया से स्टार्ट होता है. तो उसके अंदर उसकी हेल्थ, वो ब्रेन का जो बॉडी पार्ट है यानी जो एरिया है उसकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए जो प्रोटीन की जरूरत है ये एक्सरसाइज करने से प्रोड्यूस होता है. आफ्टर ओनली 1 वीक ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो ये चीजें ब्रेन में बनती है. A study in older humans, जो पुराने यानी aged लोग है, found a correlation. A correlation is a connection, an indirect link. दोनों के बीच में एक लिंक थी between aerobic fitness, the size of the hippocampus, and the performance of spatial memory test. यानी spatial memory test की हम टेस्टिंग करें, जो ब्रेन का जो हिप्पोकैम्पस की साइज है और जो आदमी एक्सरसाइज करता है, ये तीन चीज के अंदर एक इनडायरेक्ट लिंक है. लिंक यानी ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. There is a correlation. Other human studies, दूसरी जो स्टडीज हुई है, noted that aerobic exercise जो होती है यानी हम जो फिटनेस के लिए करते हैं, increase the volume of gray matter. ब्रेन में जो ग्रे मैटर होता है वो बढ़ा देता है in some parts of the brain. यहाँ पे right, so
All right, let's go ahead and read the next one. Nidhi, are you ready? Yes, sir. Go ahead, please read the next. Regular exercise can help stave off some effects of normal aging and delay or diminish the gravity of conditions such as Alzheimer's disease, depression, and multiple sclerosis. Even over a relatively short time, exercise can repair some of the loss in brain capacity associated with aging. The greatest effects have been found in processes such as decision making. Aerobic exercise can also improve short-term memory in the elderly. Exercise has been found to lower the risk of Alzheimer's disease in mice by decreasing the buildup of a protein known as beta amyloid, which forms the brain plaques that precede Alzheimer's. The mice also outperform non-exercising mice in a memory test. In a study of multiple sclerosis patients, those who exercised regularly fared better than those who exercised less. The exercise group scored better on tests of cognitive functions, and their brain scans showed less deterioration and more gray matter. Right, so regular exercise जो हम करते हैं, it can help to stave off some effects of normal aging. यानी normally जो brain aging होता है, उसके जो brain पे असर होते हैं, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो brain के ऊपर थोड़ा सा असर करती है, तो उसके effects जो होते हैं उसको अटका सकता है and can delay and diminish the gravity of conditions such as Alzheimer's disease. Alzheimer's जैसी बीमारियों का जो seriousness है उसको कम कर सकता है या उसको स्लो कर सकता है. Even depression and multiple sclerosis. Do you remember this passage that we did in real class? How many of you remember it? MS. We did it in the live class. Yes, sir, I know. Right? So we did this MS, right? कि ये जो brain diseases होते हैं, जैसे paralysis होता है या depression होता है, तो ये कम हो जाता है. ये हमने देखा है कि जो लोग अपने पूरा टाइम घर में बैठे रहते हैं, कुछ करते नहीं है, तो उनको डिप्रेशन की चांसेस ज्यादा है. लेकिन जो लोग एक्टिव होते हैं, जो घूम फिरते रहते हैं, यू नो, दे कीप ऑन डूइंग थिंग्स, दे आर लेस डिप्रेस्ड. इवन ओवर अ रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड, बहुत कम टाइम के लिए अगर एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज कैन रिपेयर some of the loss in brain capacity associated with aging. तो एक्सरसाइज हमारे ब्रेन की कैपेसिटी का लॉस को रिपेयर करता है. The greatest effect जो उसका असर होता है has been found in processes such as decision making, यानी आपकी डिसीजन बनाने की जो लेने की एबिलिटी है वो भी इंप्रूव होती है. एरोबिक एक्सरसाइज जब हम करते हैं, it can also improve short term memory in the elderly. उम्रदार लोगों के अंदर शॉर्ट टर्म मेमोरी इंप्रूव हो जाती है. एक्सरसाइज हैव बीन फाउंड टू लोअर द रिस्क ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज इन माइस. चूहों में भी ये डिसीज कम हो जाती है by decreasing the buildup of a protein known as the beta amyloid. This is some kind of protein which is not good for you. तो उसको भी decrease करता है, which forms the brain plaques. brain के ऊपर plaques आ जाते हैं that precedes Alzheimer's. यानी brain के ऊपर कांट जैसा लग जाता है. The mice also outperform non-exercising mice in a memory test. ये mice जिनको exercise करवाई, वो जो non-exercising चूहे थे उससे ज्यादा अच्छा perform किए in a memory test. In a study of multiple sclerosis patients जिनको MS था, those who exercised regularly, जिन्होंने regular exercise किया, fared better means performed better than those who exercised less. The exercise group scored better on test of cognitive function, तो उनका cognitive function भी अच्छा था, and the brain scans showed less deterioration and more gray matter. ब्रेन के अंदर जो उनकी ब्रेन की जो क्वालिटी कम होने वाली है, deterioration was less, gray matter was correct. Okay, so to read the next one, Arpita, can you read the next one? Arpita, are you there? Yes, sir. Go ahead from here. In addition to increasing brain power, exercise can help relieve depression. Relieve depression. Although it is well known that endorphins help relieve stress and
and reduce anxiety and depression. Arpita, are you there? Okay, I think Arpita is not responding. So reduce anxiety and depression. So क्या कहने का मतलब है कि in addition to increasing brain power को बढ़ाने के साथ साथ exercise can help relieve depression. Depression कम करता है. Brain power तो बढ़ता ही है लेकिन आपका depression कम हो जाता है. Although it is well known that endorphins help relieve stress. जब आपके brain में से endorphins release होते हैं तो उससे stress कम हो जाती है and reduce anxiety and depression. The BDNF plays a role as well. उसमें से जो प्रोटीन, जो पॉजिटिव प्रोटीन है, ये भी एक पॉजिटिव रोल प्ले करता है. Human studies, जो ह्यूमन पे हुई स्टडीज है, have shown that people who have received a diagnosis of major depression, जिनको बोला गया कि आपको बहुत major depression है, they typically have lower concentrations of BDNF in their blood, और उनके blood में ये चीज कम प्रोड्यूस होती है. Animal studies indicate, ये बताता है that corticosteroids जो उनके अंदर होते हैं, which the body produces in response to stress, decrease the availability of BDNF in the hippocampus. यानी जितना ज्यादा स्ट्रेस होता है तो उसमें आपका ब्रेन में जो पॉजिटिव प्रोटीन है BDNF वो कम हो जाता है. और एक्सरसाइज कैन काउंटरएक्ट दिस इफेक्ट. और एक्सरसाइज से क्या होता है, आपकी जो स्ट्रेस लेवल है, आपके जो टेंशन या तनाव है वो कम हो जाता है. Exercise also lessens depression by increasing blood flow to the brain. तो जितना ज्यादा brain में blood flow होता है तो उतना कम आपको depression आएगा. The link between aerobic exercise and improved brain function in the elderly, old लोगों में भी इसकी जो link है. In the people with impaired cognition, यानी उनके brain की जो process करने की ability है वो damage हो गई है, that is called impaired cognition, could lead to new ways to prevent. यानी ये जो लिंक है, ये लिंक जो हमने समझी है कि एक्सरसाइज करने से लोगों का ब्रेन अच्छा हो जाता है, it can lead to more new ways to prevent and treat brain disorder. यानी brain disorders को ट्रीट करने के लिए हमें शायद नया रास्ता मिलेगा. Meanwhile, और वैसे ही people may have more control over their own brain health than was previously thought. तो पहले के जमाने में ऐसा सोचते थे कि हमारा ब्रेन अगर बिगड़ जाए तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं था. हमारे ब्रेन जो है वो, हमारी बॉडी हमारे हाथ में लेकिन ब्रेन नहीं है. लेकिन ये रिसर्च के बाद ये पता चलता है कि हमारी ब्रेन की जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ, वो भी हमारे हाथ में है. यानी अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करें तो उतना अच्छा होगा. So answer the questions about aerobic exercise and brain health. No more than 2 words. So we have total of 8 questions and you have to find out the right word. I'll read it. Exercise helps people feel good mentally. उनको mentally अच्छा लगता है because it releases endorphins, और उससे लोगों का endorphin release होता है, which put people in a better dash. So tell me. It puts people in what? Here is your sentence. Endorphin wala. Release of endorphin. The chemical in the brain improves the mood, which puts people in dash. Better mood. Correct. यहाँ लिखा है which puts people in a better mood. BDNF improves the connections between nerve cells in the brain. हमारे brain का जो nerve cells है उसके connections को improve करता है because it dash how these connections और synapses are made. ये synapses और connections कैसे बनते हैं उसको ये क्या करता है? So the keyword is synapses. यहाँ पे here, right here. Stimulate the growth and development of brain cells. So what does it do? The BDNF regulates the production of synapses. Synapses को वो क्या करता है? वो regulate करता है. So what should be your answer? Regulate. Regulate. Yes, so regulates, my S house है, regulates. The BDNF improves the connection between nerve cells in the brain because it regulates how those connections or synapses are made.
Studies on rodents, चूहों पे जो study की गई है, showed that there were larger dash of BDNF in the brain just after 1 week of exercise. एक हफ्ते के एक्सरसाइज के बाद larger dash of BDNF, BDNF का larger क्या था? मैंने बोला जब बल्क में कलेक्ट हो जाता है, what is it called? यहाँ लिखा है using rodent models, researchers have found increased concentrations of BDNF in the hippocampus. What is it? Increased concentrations. So what should be our answer here? There were larger की जगह increased what of BDNF in the brain? Concentration. Correct. Concentration. Larger concentration of BDNF in the brain. Okay. Exercise may lessen the dash of Alzheimer's disease and other disorder that affect the brain. ये Alzheimer's जैसी disease का lessen the dash. Lessen what? यहाँ लिखा है regular exercise can stave off the effects of normal aging. Normal aging को भी अटकाता है and it can also delay or diminish the gravity of conditions such as Alzheimer's disease. डिले यानी कोई चीज को लेट करता है, कोई चीज को खत्म करता है, that is diminish the gravity of conditions such as Alzheimer's. Fourth one, exercise may lessen the dash of Alzheimer's disease. What will it do? Lessen the, correct, gravity is the answer. Gravity of Alzheimer's. As people age, जैसे जैसे लोगों की उम्र होती है, they may not function as well because they lose some brain dash. उनके brain में कुछ तो कम हो जाता है, but exercise can repair some of this lost ability. Here, older लोगों की बात कर रहे हैं, right? Even over a relatively short time के लिए, exercise can repair the loss in brain capacity associated with aging. Aging means in older people क्या होता है? कौन सी चीज उनकी कम होती है? लॉस इन ब्रेन कैपेसिटी, और लॉस इन ब्रेन कैपेसिटी को वो चीज क्या करती है? रिपेयर करती है. कौन सी चीज? एक्सरसाइज. क्लियर था ये क्वेश्चन बताने? सेम थिंग इज आस्क्ड हियर. As people age, they may not function as well because they lose some brain dash, but exercise can repair some of it. So what does it improve? Fifth one, come on. You guys have to answer. It can improve brain capacity, right? Okay. Sixth one, a study with multiple sclerosis patient, MS के patients की जो study की गई showed that those who exercise more had less dash of the brain. उनके brain का कौन सी चीज कम थी? यहाँ लिखा है कि those who exercise regularly fared better, और brain scans ने बताया कि they had less deterioration and more gray matter. So what is the answer? Gray matter or deterioration? Deterioration. Right? Deterioration. Usually smaller amounts of BDNF were found in the blood of people dash with depression. कैसे लोगों को कम amount of BDNF मिला? Blood of people dash with depression. यहाँ दिया गया है कि यहाँ पे सेकंड लाइन में है. Look at the answer. Studies have shown that people who have received a diagnosis of major depression typically have lower concentration of, so they have received a diagnosis of depression, major depression. The people who have received diagnosis of depression. So again, smaller amount of DNF are found in the blood of people dash with depression. Verb form क्या आएगा? Diagnose. Yes. Diagnosed with depression. All right, last one. Exercise may lessen the effects of stress. Stress का effect कम कर सकता है because it can dash the effects of corticosteroids which are produced by stress. तो उसका सामना करता है exercise. यहाँ पे लिखा है exercise जो होती है वो corticosteroid का effect fight करता है. तो indicate that corticosteroid जो होता है happens in the body response to stress that decrease the availability. So exercise क्या करती है उसको?
फाइट करती है, फाइट को क्या बोलते हैं, काउंटर एक्ट दिस इफेक्ट, इस इफेक्ट को काउंटर एक्ट कर सकती है हमारी एक्सरसाइज. सो आंसर इज काउंटर एक्ट. इट कैन काउंटर एक्ट यानी कोई चीज का सामना करना, फाइट करना. एक्सरसाइज में लेसन द इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस because it can counteract the effects of corticosteroid which are produced by stress. Okay, so are we all clear with this? All the questions? Any doubts here? Okay. So now look at the word families, nouns, verbs and adjective. तो पहला हमारा जो noun है वो है diagnosis. जब डॉक्टर पता लगा कि बताते आपको कि क्या हुआ. The doctor asks the patient a series of questions to make a diagnosis. और यानी जो उनका conclusion होता है कि अच्छा आपको कैंसर है, आपको ये है, आपको ल्यूकीमिया है, तो वो कैसे पता चलता है? After they get the report and then the questions. So that whole process is called diagnosis. Diagnostician is ऐसा डॉक्टर जो लोगों की प्रॉब्लम्स पता लगाता है. It's called a diagnostician. The doctor is an outstanding diagnostician. The verb is diagnose, यानी किसी को बताना कि क्या है प्रॉब्लम. Look at the sentence. It is not always easy to diagnose a disease. एक रोग क्या है बताना वो कोई आसान नहीं है. And adjective. The word is diagnostic, related to the same thing. Doctors use different diagnostic tests to identify diseases. Diseases को identify करने के लिए वो अलग-अलग diagnostic tests करते हैं. Right? Okay. So that makes it the word diagnose. Let's go to the next word. Gravity. Look at it. तो gravity हमने एक तो सीखा है gravity. Gravity comes from the word grave. Grave यानी बहुत serious. So gravity, because of the gravity of a condition, उसकी condition इतनी serious थी, the patient was kept in the hospital. उसको hospital में रखा गया. Grave यानी serious. The patient arrived at the hospital in grave condition. Grave का दूसरा meaning भी होता है कबर. किसी की कबर होती है, that is also grave. Adverb है gravely, यानी बहुत serious तरीके से. The patient was gravely ill. Patient बहुत serious तरीके से बीमार था. Next word is indication, यानी कोई चीज दर्शाना. तो दर्शाने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं indication. Forgetfulness may be an indication of Alzheimer's disease. यानी भुलक्कड़पन, जो आदमी धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगता है, वो एक अल्जाइमर्स डिजीज होने का इंडिकेशन यानी उसका एक प्रतीक है. और इट मे जस्ट बी अ नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग. या तो उम्र का एक असर है या फिर आपको अल्जाइमर्स की प्रॉब्लम है. इंडिकेटर इज अ थिंग जो इंडिकेट करती है, वो चीज दिखाती है, दर्शाती है. दैट इज एन इंडिकेटर. There are several key indicators that doctors look for in their diagnosis. Diagnosis जब देते हैं तब वो बहुत सारे key indicators को देखते हैं. Verb है indicate यानी दर्शाना या दिखाना. Studies indicate, studies ये बताती है that exercise helps increase brain power. Indicative is the quality, adjective है जो चीज दर्शाती है, दर्शक. It's indicative. Memory loss may be indicative of a more serious condition. यानी अगर memory loss है तो it is indicative, ये दिखाती है कि शायद आपको बहुत serious कोई condition है. The next is impair. तो पहले हम देखेंगे impairment. Impairment यानी जब आप में body काम नहीं करती है, बिगड़ा हुआ सामान, that is impairment. Multiple sclerosis patients suffer many physical impairments. यानी उनके बॉडी में कई सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं. इम्पेयर वर्ब है यानी कोई चीज काम करना बंद कर देती है, दैट इज इम्पेयर. एजिंग यानी उम्र होती है. एजिंग कैन इम्पेयर शॉर्ट टर्म मेमोरी. लोगों की शॉर्ट टर्म मेमोरी वीक हो जाती है बाय एजिंग. एडजेक्टिव है इम्पेयर्ड. इम्पेयर्ड मींस आपका जो बॉडी का सामान खराब हुआ है, दैट इज इम्पेयर्ड. Impaired memory यानी खराब हुई memory can be improved by regular exercise. Impaired means damaged. Basic meaning is damaged. Mood is a noun. Mood यानी mood. People are often in a good mood after exercising. लोग अच्छे mood में होते हैं. Moodiness यानी किसी का स्वभाव या मूडीपन.
A person who suffers from moodiness may be helped by regular exercise. कुछ लोग बहुत moody होते हैं, कभी बहुत खुश तो कभी चिड़चिड़े होते हैं, तो उनका स्वभाव improve हो सकता है अगर वो regular exercise करें. And adjective है moody. Moody is again a person. If you're feeling moody, get some exercise. And adverb is moodily, in mood में आके moodily. The patient replied moodily when asked if he was feeling much pain. बहुत ऐसे mood में answer दिया, तो he answered moodily. Okay. So now हमने जो words देखे word family में से, वो same words को use करके आपको right answer select करना है. You can see the whole screen. देखा है बधु? So okay, you have to select the right one. We'll highlight it. If you're suffering from a bad dash that won't go away, it is important to see a doctor. Mood, moodiness or moody. If you're suffering from a bad dash, bad what? Mood. Mood. If you're suffering from a bad mood, mild depression may be a temporary response to the normal stresses of life. Life में जो stresses होते हैं उसका एक response होता है, छोटा सा हल्का सा depression. But ongoing depression, अगर आपका लंबा time चलने वाला depression होता है, could dash a more serious condition. वो दिखाता है एक ज़्यादा serious condition. Indicate. It could indicate a more serious condition. The doctor will ask you a series of questions. बहुत सारे सवाल आपको पूछेंगे and may recommend some test. आपको कुछ test recommend करेंगे to come up with a dash. और उसके बाद वो solution लाएंगे. He will come up with a third one. Which one? He will come up with a diagnosis. If your condition is dash, अगर आपकी हालत गंभीर है, the doctor may give you medication. बोलो fourth one. Grave. Grave. If your condition is grave, the doctor may give you medication. आपको दवाई देंगे. If on the other hand, लेकिन उसके सामने if you're not suffering any disorder, serious disorder, कोई serious disorder नहीं है, or dash, the doctor may recommend something as simple as regular exercise. So what can come? No serious disorder or impairment. अगर आपका सामान ठीक से काम कर रहा है, कोई इम्पेयरमेंट नहीं है, तो फिर वो आपको सिर्फ सिंपल एक्सरसाइज करने के लिए बोल सकते हैं. So डिक्शनरी स्किल्स, कभी कभी एक ही वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, राइट? सो मेनी वर्ड्स हैव मोर देन वन मीनिंग. यहाँ पे देखिए ग्रेविटी का दो मीनिंग है. एक तो है सीरियसनेस और दूसरा है अ फोर्स दैट होल्ड्स ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ, जो गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं उसको. आई डोंट नो इफ आई एम स्पीकिंग इट राइट. Correct. Utkarsh, right? Okay, so gravity makes it easier to walk downhill than uphill. टेकरे से नीचे उतरना टेकरे से ऊपर जाने से इजी है. ये ग्रेविटी का कौन सा मीनिंग है, ए या बी? कौन से टेकरे की बात हो रही है? B. Yeah, it is B. That is gravity. Because of the gravity of his injury, उसकी इंजरी इतनी सीरियस थी, the doctor told him not to exercise for several months. A or B? A. This is A. Now the other word is disorder. Disorder का दो मीनिंग होता है. Disorder नहीं, जब सब कुछ अस्त व्यस्त होता है तो उसको disorder बोलते हैं. That is confusion and lack of order. Disorder का ये भी मीनिंग होता है disease or illness. किसी को कोई मानवी बीमारी है तो उसी को भी disorder बोलते हैं, right? So the doctor's office, doctor का जो office था, was in such disorder that she couldn't find the test result. उसका यानी हर चीज उसके ऑफिस में इतनी अस्त व्यस्त थी कि उसको टेस्ट रिजल्ट नहीं मिल रहा था. A or B? B. Right, it is a B. Depression is a serious disorder, but there are ways to treat it. Depression एक गंभीर प्रकार की बीमारी. A. This is A. Are we clear, everyone? Now we go to the listening part of today. यहाँ पे हमारे पास 5 questions है. And you will be answering these 5 questions, right? Listen to the conversation and complete the form below with no more than one word. आपका one word में answer आएगा.
तो हॉस्पिटल फिटनेस सेंटर है, न्यू पेशेंट इंफॉर्मेशन। सो पेशेंट का नाम क्या है, अमेंडा व्हाट, तो अमेंडा की सरनेम आएगी, राइट। इंटरेस्ट क्या है उसका, डैश एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज वो लिखना है। लेवल क्या है, शी इज अ बिगिनर, अभी चालू किया है, बट प्रीवियसली टुक डैश क्लासेस, वो कौन से क्लासेस करती थी। रेफरल किसने उसको रिफर किया है, सिफारिश की है। रिकमेंडेड बाय डॉक्टर, डॉक्टर ने बोला है उसको ये है फिटनेस सेंटर में आने को। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव डैश, उससे उसका डैश इंप्रूव होगा। एंड स्टेव ऑफ डैश गेन, कौन सी चीज क्या गेन उसका स्लो हो जाए। आंसर क्वेश्चंस 1 to 5. Unit 5, Health, Aerobic Exercise and Brain Health. Listen to a woman talking to a trainer at a fitness center. Hello, is this the hospital fitness centre? Yes, I'm Tim Smith, a trainer here. How may I help you? I'm interested in taking classes. Just let me take down your information. May I have your name? Yes, it's Amanda Clark. That's Clark, C-L-A-R-K. R.K. Right. And what kind of classes were you interested in? I need to get some exercise. Do you have aerobics exercise classes? Yes, we do. We have several levels of exercise classes. Are you a beginner? Yes, I am for aerobics classes, but I've taken other classes previously. I took yoga classes last year. So, you've taken yoga classes. Very good. And why are you interested in exercise classes with us now? Do you have a referral? Yes, I do. My doctor told me to call you. I've been feeling depressed, and she said it would improve my mood. I think we'll be able to help you with that problem. Medical research shows a clear link between exercise and mood. Also, I've been getting a little heavy, and the doctor thought that regular exercise would help me stave off any big weight gain. It certainly will. Exercise has many benefits. We also work a lot with the elderly here, who may be suffering from dementia or decrease of cognition. But you, of course, are much too young for that. However, we can help you with the issues your doctor wants you to work on. So Amanda what? Clark. C-L-A-R-K, Clark. See the spelling, it should be correct. What is her interest? Aerobic. Aerobic. Next, beginner. But previously she took what classes? Yoga. Yoga class. Referral doctor ने दिया है to improve dash. Mood. Mood. Also dash gain. Weight. Weight gain. Weight का spelling है the weight. Right? Okay. So that was the listening part of this vocab session. Okay. So this is the writing which we won't be doing. That is the speaking. Look at the questions. Do you find that exercise improves your mood? What other things do you do to feel better when you are in a bad mood? Now that researchers have found links between exercise and improved brain capacity, do you think exercising will become more popular? Why and why not? The future prediction wala question. Because exercising has so many health benefits, itne sare benefits hai, do you think more should be done to stimulate people to exercise more? क्या आपको लगता है लोगों को ऐसे जागरूक करना चाहिए कि वो लोग ज्यादा एक्सरसाइज करें? Right? Okay, so that brings me to the end of the vocab session.